Hello everybody. So today I'm making one very simple new design with crochet. I'm using 2.5 number hook and 2 ply yarn. So let's start. So I have completed this chain, and after that I have done one line of single crochet and one line of half double crochet. So let's start from the first one. We'll start to make one double crochet, one. Next we also do one double crochet, that means two double crochet. In next we'll make one double crochet. So we have completed 3 double crochet. After that we will turn over our yarn on the hook 3 times, 1 2 3, and from there, can you see this stitch? So we have to come down on the first single crochet we have done. From here we'll make one stitch. We'll take out 2 yarn, again we'll pull 2 times, then 2, and after this 1. Okay, then again we will make double crochet. Okay, like this. Will not complete the double crochet, will only pull from 2 yarns. Okay, and in the last we'll make from the same stitch one double crochet. You have to pull only 2. Now we will pull 2 yarns like this. 2 stitch we have to pull out, so it will look something like this. Okay, now from here we will make, in the next stitch we'll make one double crochet, again we will make one double crochet. That every time we have to make 3 double crochet, and in the fourth one we have to make this stitch. Okay, now again we will twist our yarn on the hook, and in the next one from here we will make one double crochet like this. Then again we'll pull from 2 loops, and in the end 1 loop. Now from here again we will make half kind of double crochet. We'll not finish it here. Then again we will make only 2 yarn we have to pull instead of 3, like this, like this, and last one. Okay, now we'll pull out from 2 loops like this, and in the end, so our stitches will look something like this. And we have to make 3 double crochet, 1 2 and 3. So we have to complete this whole, like making these loops, and after that I'll add one more color and I'll show you how to make on this. Okay गाइस, अब हम सेकेंड कलर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम फिर से डबल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे. तो हम पहले बीच में उसके लेके आएंगे जो हमने फर्स्ट वाला बनाया है. तो उसके लिए 1 2 3 और इसके ऊपर 4, यहाँ पे 4 5 तक हम डबल क्रोशिया डालेंगे, और 6. ठीक है, इसके ऊपर अब हम लूप बनाएंगे. अब हम बीच से बनाएंगे 1 2 3, और जो ये वाला है यहाँ से अब हम इसमें लूप डालेंगे. इससे थोड़ा सा ये ऊपर होगा. वापस से हम 2 2 करके फिनिश करेंगे. 1 2 1 2 1 2. अब यहाँ से अब हम डबल क्रोशिया लेंगे 1, इसको हाफ ही फिनिश करेंगे. 2, इसको हाफ फिनिश करेंगे.
ये जो यान है ना ये अच्छा नहीं है, 3 आगे से बहुत ख़राब है ये, और 4 टाइम हम इसमें से लेंगे, और 5th वाला हम फाइनली यहाँ से लेंगे, जिससे कि हमारा इसके साथ अच्छे से अटैच हो जाए। और अब हम सारे में से 2 करके इस तरह से लूप्स को निकालेंगे। देखिए ये इससे थोड़ा सा ऊपर की साइड जाएगा। अब हम वापस से ना डबल क्रोशिया डालेंगे, जो ऊपर वाली चेन है उसमें अब हम डबल क्रोशिया डालेंगे। और इसका जो मिडल वाला है हम वहाँ से डबल क्रोशिया डालने के बाद लूप डालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब 1 2 3 और इसके मिड वाले से हमको ना डबल क्रोशिया स्टार्ट करना है। 2 लूप से ही इस तरह से हम निकालेंगे। इसके बाद 1 हाफ करेंगे इसको, 2 हाफ करेंगे इसको, 3 हाफ फिनिश करेंगे, 4 हाफ फिनिश करेंगे, और लास्ट 5 वाला इसमें से लेंगे, जिससे कि अच्छे से इसके साथ अटैच हो जाए। उसके बाद 2 लूप से हम इसको फिनिश करेंगे। Okay, so I'll finish it and then I'll show you the final one. Okay.